Here we go. हाँ जी, we're back today और हम आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बिल्डअप की. For that, बहराम तो हमारे साथ हमेशा होता ही है. We've got another guest for you, a cricket fan, Mahmood. How are you? Thank you so much, Saad. I'm good. First of all, I would like to thank you for having me on the show. As you can see, by the smile on my face, I am really excited to be here. Thanks for having me. For sure. Just by the way, मैं लोगों को बताता चलूँ, महमूद ने हमें जब कांटेक्ट किया था उससे पहले ही उसने बता दिया था कि he has a stammer. लेकिन we don't mind that, obviously. No, absolutely not. I mean, 1% of the global population has a stammer, और वो कोई 8 billion लोग हैं या 8 billion से ज़्यादा लोग हैं मेरे ख्याल से. So 1% of that is a lot, and that shouldn't stop you from appearing on our show, right? Obviously, यार क्रिकेट की बात करनी है, everyone's included it. और दूसरी चीज़ ये भी है यार कि a lot of people did vote के fans आने चाहिए, ठीक है? So we just kind of wanted to mix it up. So we still have fans. तो दिल बर्दाश्ता मत होए. हाँ, अच्छा, उससे मैंने नोटिस भी किया तुम आज ऑरेंज जर्सी पहन के आए हो. कल जो डचीज ने किया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उस पे तो कुछ पता हो यार वही मैं कह रहा था, फैंस को भी तो आज अपसेट्स की भी तो बात करेंगे. और मैं जानकर ऑरेंज पहन कर आया हूँ क्योंकि वर्ल्ड कप में ऑरेंज भी सर्व हो गए, काबुली पुलाव भी सर्व हो गए. यार भूख लग रही है. हाँ चलो बाद में कुछ करते हैं ना भूख का. बट यार 2 phenomenal upsets, really exactly what the World Cup needed. और क्या ही बोले यार, अगर आप तुम नोट करो साथ, ठीक है दोनों अपसेट्स हुए हैं, वीकर टीम्स वन अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन, बट दे बीट देम लाइक दे वर competing, but the comfortable victories. One-sided. हाँ, one-sided entirely नहीं. मतलब at the end of the day results check करो, 38 runs and 45 runs. Yeah, and both teams seized the moment. और बड़ा उन्होंने प्रोफेशनली अप्रोच किया. और नेदरलैंड्स की तो यार मैं क्या बात करूं, इतने वो कंपोज्ड थे, जीत कर भी कोई वो उन लोगों ने हरकतें नहीं की. एंड आई एम नॉट सेइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है आप सेलिब्रेट करो जितना करना है, मगर वो लोग इतने कंपोज थे एज इफ दे एक्सपेक्टेड दिस. और वो स्कॉट एडवर्ड्स ने भी, एंड I'll go on a rant on Scott Edwards, but he came and said, yeah, we're gunning for a semi-final spot. Bas Deleda said this prior to the tournament. So you can see कि यार they've come here with nothing to lose and they really want to give it a proper shot. और यार I mean Scott Edwards really a carry job. You'd have to say 78 runs with the bat when he came out at 82 for 5. वो 112 for 6 हो गया और 140 for 7 हो गया. Score वो लेकर गया है 245 for 8 तक in 43 overs. Which is phenomenal. उसके अलावा he took 3 catches and his captaincy was probably the best captaincy effort I've seen in all in the entire World Cup. And not just the close-in fielders, attacking fields, matchups उसको सारे पता थे, homework कराया हुआ था. तो bowling changes obviously अच्छे होंगे अगर आपको matchups का पता हो, which I think he absolutely nailed. So overall, जिस तरह उसने पूरी टीम को lead की है और जिस तरह उसकी सारी strategy थी, and the way he paced his innings and just went for it and put South Africa under pressure. Singles आपने choke किए, वो बड़ी shots के लिए गए, वो out हो गए, and that's his captaincy. And yeah, I'm just so happy for the Netherlands. हम तो वैसे ही उनके indebted हैं. Netherlands. मगर एक तरह से फिर से help की ना. पाकिस्तान के चांसेस तो बेहतर किए हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराकर, और अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर. If I may say something, like you just said, about Scott Edwards, Pakistan और Netherlands का जो मैच था, Scott Edwards, as you've just said, a great batsman. When he came into bat against Pakistan, I actually thought कि मैच खत्म नहीं हुआ अभी तक. Yeah. But Haris Rauf ने जो बॉल कराई थी उसको, unplayable ball. Yeah. Unplayable. So I think when he you can't blinked, play, you can't do anything against that ball. Yeah, and plus I think कि उसने आँख अभी झपकी थी तो बॉल बैट तक पहुंच गई. Exactly. वो LBW हो गया था. That's just how quick he is, and that's a very good point as well. Express pace, got the better of the Netherlands. और South Africa में 150 वाला कोई नहीं था. 140 plus थे, 150 वाला कोई नहीं. इग्नोर किया नहीं था ना. हाँ, इग्नोर किया नहीं था. What a big miss. तुम तो मुझे बता भी रहे थे your second favorite team is South Africa. Absolutely, absolutely. So I'm exactly I'm not happy that Netherlands won, but World Cup I think has started. Honestly, man, South Africa is just such a funny team. They humiliated Australia, 134 run drubbing, और Netherlands से हार गए. और अब 2 ICC events पे consecutively Netherlands से हार गए. उनकी बोगी टीम बन गई है. और खैर हम और हैं भी सारे South African rejects. सारे रूल ऑफ वैन डर मर्वा, वो एंगलबर्ट भी है, और केड़े और भी है यार एक
Colin Ackerman तीनों South Africans और भी इनके होते थे जो अब नहीं है, but a lot of South Africans who can't cut it in South Africa, they're poached by the Netherlands. Roelof van der Merwe की तो बल्कि वर्ल्ड कप लेगेसी और बढ़ गई है यार, वो साउथ अफ्रीका के लिए भी तो खेला है 2009 में T20 वर्ल्ड कप, and there's maybe one more ICC event that he probably played for South Africa which I'm missing. Champions Trophy 2013 13 या 2009 वाली? नहीं 2009 वाली, sorry. Yeah, वो वाली इसमें यूनस ने कैच छोड़ दिया था विटोरी का, नहीं ग्रांट एलियट, he dropped Grant Elliott. अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी अफगानिस्तान पे भी हम टच करेंगे. Brilliant win, right? अभी उनका मैच भी चल रहा है उनका न्यूजीलैंड के साथ. But like I've said, वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, but England they've lost 2 out of 3. Yes. And how they actually they've approached the World Cup right now, like coming in and the captain saying we're not here to we're not here to defend anything. We're here to attack. we're here to attack. कहता भी इनको पता नहीं कैसे attacking champions. Joss Butler's attacking champions. That I don't think that exactly that didn't rub off the right way to everyone. That's what I think. Yeah. सही है. अच्छा, वैसे I'm extremely chuffed for Afghanistan यार. They've been that spoiler team for a while, जो हमें पता है कि जिस दिन चल गए काबिलियत रखते किसी को भी हराने की, मगर वो विन आ नहीं रही थी सादी. They had only beaten Scotland in a very very funny game back in 2015. वो 1 wicket win थी उनकी. वही एक उनकी अकलौती वर्ल्ड कप win थी. They should have won a couple of games in the previous edition. They should have defeated Pakistan. ठीक है. जहाँ से इमाम वसीम and Bob Riaz and Shadab also. But yeah, I'm really happy that they've overcome that barrier. England को हराना बहुत बड़ी बात है, you know. Out of all the teams, शायद उनको हराना सबसे बड़ी बात है. Not just because they're one of the best teams right now in the world, but also because they're the colonizers, right? There's that as well. तो जिस तरह मास्टर क्लास थी स्पिन बॉलिंग की, you know, मुजीब ने सिर्फ 3 विकेटें नहीं ली बड़ी हैरी ब्रूक की भी विकेट उसने ली, रन्स भी किए, वेरी इंपॉर्टेंट रन्स उसने. याद है पाकिस्तान को फास्टेस्ट एवर 50 बाय एन अफगान प्लेयर मारी थी. वेल ही इज डन इट अगेन, डिडंट क्वाइट गेट टू 50. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रन्स. एंड आई थिंक ओवरऑल भी यार बैटिंग में देखो तो गुरबाज अनलकी, वो हशमत ने उसको रन आउट करा दिया, वरना वो 80 और 57 चल रहा था. एंड देन आल्सो आई थिंक इकराम अली खिल, वेरी वेरी गुड, स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 50, वेरी वैल्यूएबल 58 व्हेन यू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, राइट. और उसके अलावा भी यार नबी पिच्ड इन, ही गॉट अ फ्यू विकेट्स. तो स्पिन बॉलिंग मास्टर क्लास था. दे अंडरस्टूड द कंडीशंस वेल. दिल्ली की उनको फेवर भी करी थी, उन लोगों ने पूरा फायदा उठाया. और इंग्लैंड की वही बात है ना, दे हैवंट लुक्ड लाइक व्हाइट हॉट इंग्लैंड दैट वी हैव बिकम सो अकस्टम्ड टू. उनका जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जो हमें पसंद भी है और सक्सेसफुल भी रहा है, हैज वन देम अ वर्ल्ड कप, वी हैवंट क्वाइट सीन दैट कम टू द फोर. और अभी स्टोक्स वापस आएगा तो देखते हैं तब क्या करते हैं. बट मोर और लेस यू नो इंग्लैंड्स बॉलिंग आई थिंक इज स्टिल अ वेरी बिग प्रॉब्लम यार. जिस तरह वो वोक्स और करन पिट रहे हैं, ठीक है, वो तो शुक्र है टॉपली आया, उसने वो 4 विकेटें ली थी बांग्लादेश के खिलाफ. आई थिंक ही बोल्ड वेल और डिसेंटली वेल वर्सेस अफगानिस्तान एज वेल. Mark Wood rushed a few guys and Adil Rashid was good, but I thought they'd chase 280 odd. You know, मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा और अफगानिस्तान आराम से ही हरा देगी. So lots of credit to Afghanistan and they've probably got another upset or two in them. और अभी वो कह रहा था चीपॉक पे न्यूजीलैंड को खेल रहे हैं. They're bowling first, so they could win this game if they you know restrict them to 250 or under 250. और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान is a even Steven sort of competition I would say at this point. In Chennai, right? और इस दफा नसीम भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए. If I can add something to this, like I am actually scared about our match against Afghanistan. उनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, आई थिंक इट्स द बेस्ट. सेकंड पर आप इंडिया का ले लें probably. I think spin bowling attack best है और bowling attack best India का है overall. Yeah, probably yeah. That sounds about right. Yeah. अच्छा, मैं कह रहा था मुझे एकदम साउथ अफ्रीका वाले मैच से मुझे बात याद है कि सिर्फ मर्क्यूरियल पाकिस्तान को क्यों कहा जाता है, साउथ अफ्रीका इक्वली हमारे जैसे. South Africa just shit the bed each time, right? They have a habit of it. And they shit the bed and light it on fire, right? तो पाकिस्तान का जरा डिफरेंट है. पाकिस्तान will be unpredictable at times, even though I keep saying this team is not like that. They're far more consistent. वो जो पूरी conversation है कि the team gets galvanized and they go on a run, it is still true to a certain extent, but less when it comes to Babar's unit. I think they're far more consistent और एक pattern नजर आता है आपको. अब वो pattern कभी successful होता है, कभी नहीं successful होता, but there is a process. There is a method to the madness. You might disagree with it. I might agree with it. He might disagree with it.
और you know opinions will differ. I'm not saying कि हम ये दोनों disagree करते हैं, मैं agree करता हूँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, general example दे रहा हूँ कि वही बार हम कहते हैं ना multiple ways of skin a cat. तो पाकिस्तान का एक तरीका है, मगर जो भी है वो consistent है उसके अंदर भाई. तो I don't think this is the same mercurial side, but yes, Pakistan, if they do become red hot, they go on runs, and we're really hoping that they go on one in this World Cup. Starting with Australia, right? अच्छा चलो. Australia. हाँ, तुमने पाकिस्तान की बात छेड़ ही दी है. तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच से आने से पहले थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीजें हुई हैं. ऐसी वैसी. बाबर आजम की शर्ट कंट्रोवर्सी जो उसने विराट कोहली से मांगी है, and people are pissed on that. क्यों? यार मुझे समझ नहीं आती है, आप लोग अगर फुटबॉल देखते हो तो फुटबॉल में शर्ट स्वैप तो बड़ी आम चीज है. यू नो बड़े बड़े मैचेस के बाद भी लोग करते हैं. विराट कोहली एंड बाबर आजम डू शेयर अ रिलेशनशिप इन व्हिच बाबर आजम गिव्स हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. वो सीनियर की तरह ट्रीट करता है. अगर आप जीतते तब भी आपने प्रॉब्ली शर्ट लेनी थी, आपने वो पहले से शायद बात की हो. और मे बी यार उसने शर्ट कोई ऑक्शन वगैरह करनी हो, हूज टू से शर्ट का करना क्या उसने, शायद किसी ने मंगवाई हो कोई Instagram post as well about someone asking for a shirt कि like मैं कितने सालों से मंगवा रहा हूँ. अच्छा आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं हमने नहीं देखा, मगर खैर पॉइंट इज कोई बीमार हो सकता है उसके लिए मंगवा सकते हैं. चलो उसने अपनी कलेक्शन की भी रखनी हो, आई डोंट थिंक इज दैट बिग अ डील. और ये जो एक पूरा नैरेटिव बन गया ना कि ओ दीस गाइज आर सॉफ्टीज, इनको बदमाश होना चाहिए. यार बॉयज अच्छे हैं, खुश हो जाओ कि बॉयज अच्छे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा चाहता हूँ शर्ट वाली बात में नहीं, वैसे मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बदमाशी दिखानी चाहिए, दिलेरी दिखानी चाहिए, जिगरे के साथ खेलें, एक एटीट्यूड चाहिए हमारी, खुन्ने खोलें. थोड़ा सा चाहिए. I think it was definitely blown out of proportion, and plus you know they just met after the game. उसने वो एहसन इफ्तिखार नागी को जो अपना आपका मीडिया मैनेजर है उसको बोला कि इस तरह शर्टें ले लो. मुझे कोई इसमें इतनी बड़ी डील नहीं नजर आती. बाकी कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स है जिनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. मगर कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने तो ये भी सजेस्ट किए कि कौन अगला कप्तान होना चाहिए और किस तरह ये करना चाहिए. आई थिंक दिस इज इल टाइम्ड. You know, you have these conversations after the World Cup when you're at the end of a cycle. और अब बाबर ने इतनी कप्तानी कर ली क्योंकि you can do a proper performance evaluation on that like any professional setup. और outside noises को इस तरह इस point पे आकर ये बात नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से. I'm not saying don't have the conversation after the World Cup, but it's futile right now because you're playing the World Cup. All you can really do is back Babar and back this team. जीते हारे यार आप back तो करो, आप अपना fan वाला buy-in तो पूरा करो ना. Support the team wholeheartedly, जो कि a lot of people both fans and former cricketers I suppose are struggling to do. अच्छा उसके साथ साथ एक तो ये बात तो हो ही गई. उसके साथ साथ एक ज़का अशरफ अली कंट्रोवर्सी भी थी. ये क्या जी? ये थी कि जैसे ही पाकिस्तान मैच आ रहा था तो हैशटैग फिक्सिंग वाले ट्रेंड चल गया और ज़का अशरफ 2011 में भी था वहाँ पे, अभी भी है वहाँ पे, तो उसने भी फिक्सिंग की होगी. यार मतलब क्या ही मैं इस पे बोलूँ, you know, मतलब एक सॉरी they were the better team. उन्होंने हमसे बेहतर खेला, कोई फिक्सिंग वाला कोई सीन नहीं था भाई. We even gave Pakistan 20% odds to win that game. India is far superior across all three facets of the game. Fielding में भी अगर आपका शादाब है, उनके पास जडेजा है. If I can add, go for it. आपकी team, they actually stepped into a field surrounded by a very hostile crowd of 120,000 Indian fans. आपने वहाँ के scenes देखे हैं किस तरह से उन लोगों ने treat किया आपकी team को. So you have to have some sort of sympathy कि किस तरह से आपकी team, obviously यार the Indian team outplayed the Pakistani team. हाँ वो बात तुम्हारी ठीक है. Obviously, but like इस तरह की चीजें कि fixing और इस तरह से, I mean like I know one guy कि वो इस तरह की मुझे बातें बता रहा होता है कि like 1 second this is something funny. वो मुझे इस तरह से बताते हैं कि 2012 में जब पाकिस्तान टीम जब गई थी इंडिया तो we won the T20 हम जीते थे. 1-1 था और 2-1 ODIs थे. तो आप ये प्लीज सुने, ये आप हंसेंगे. तो हम जो लास्ट ओडीआई जो जीते थे ना, उनको जीतने दिया था हमने बिकॉज अगर हम ना जीतने देते तो इंडिया से हम वापस ना आ सकते हम. वो वाली सीरीज थी ना, तुम्हें याद होगा वो आ रहा है पाकिस्तान. एग्जैक्टली, आने दो. वो तो आने दो वाली सीरीज. मैंने
इस तरह की बातें भी सुनी हुई हैं। यार आपस की बात है, you know, अच्छा, first on the crowd thing, we spoke about it at length, but ultimately you cannot use that as an excuse. Absolutely. बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़ी हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी, but खैर we're not ashamed to bring this up. Point is, whilst it was bad, you cannot use that as an excuse. और बाकी जहाँ तक ये fixing tales हैं या fixing जो हैं क्या कहते हैं उनको, conspiracy theories. The fixing gate. The fixing gate or whatever. देखो एक तो मेरे ख्याल से PTSD बहुत है पाकिस्तानी फैंस को, और वो मैं थोड़ा समझ भी सकता हूँ क्योंकि काफी फिक्सिंग हुई भी है. So the PTSD is understandable, but what I don't understand is कि आप हर मौके पे रोल देते हो जिस तरह कि आप वैसे हार ही नहीं सकते. India were the better side, ठीक है, they were expected to win. Home crowd condition सब कुछ उनके फेवर में था. आप एक पॉइंट तक अच्छा चल रहे थे, कोलैप्स ने आपको मरवा दिया. बट ये फिक्सिंग वाली बात जो है ना, ये इतनी ज्यादा मैं सुनता हूँ. ठीक है, अभी ज़का अशरफ आए हैं, उन्होंने कहा है कि बस ये मैच आपको हारना है तो देखो टीम हार गई है. कितना कन्वीनियंट है आपके लिए कहना. वो लड़के गए हुए वहां पे खेलने, जीतने, ठीक है, they couldn't pull it off. In fact, they literally, you know, collapsed, or what's the better word? Imploded, crumbled. Yeah. Obviously, players, they don't enjoy losing. Yeah. मगर पाकिस्तानियों का पता है क्या सीन है? हर चीज साजिश है. हर एक चीज जो भी कराया अमेरिका ने कराया. अफगानिस्तान इंडिया से हारा है, इंग्लैंड इंडिया इंग्लैंड से हारा है. It's all fixed. Why do you even bother watching if that's how you think? Like seriously. अच्छा छोड़ यार इस सारी कंट्रोवर्सियों को छोड़. नेक्स्ट पॉइंट. मगर वैसे एक चीज मैं ये बोलूंगा जरूर कि ज़का अशरफ को जाकर इस तरह एक दिन पहले पूरी टीम से जाकर मीटिंग करना, I don't think there's any value that can be added. I'm not in favor of administrators going and giving pep talks. अगर रमीज होता मैं फिर समझ लेता क्योंकि रमीज ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है और वो फॉर्मर क्रिकेटर है. But even there some people would have issues. Point is, yeah, you would, and a lot of people would. ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कम से कम उसमें थोड़ी सेंस बनती है. But administrators should focus on administrating. ये उनका काम नहीं है. So I thought that was a very, you know, useless sort of exercise. और बल्कि देखकर थोड़ा गुस्सा ही चढ़ा था मुझे कि क्या जरूरत है यार आपको. अगर आपने जाकर ये बोला कि बॉयज जीतना है तो आप प्रेशर डाल लो ना फजूल का. क्यों डालना है फजूल का प्रेशर? Exactly. Not in favor. I agree with that. अच्छा, कंट्रोवर्सी से साइड, एक और खैर कंट्रोवर्सी तो नहीं है लेकिन एक और पाकिस्तान के साथ जो हुआ है वो ये हुआ है कि अब्दुल्ला शफीक को फीवर हो गया और भी काफी ज्यादा को फीवर हो गया. अब्दुल्ला शफीक तो मुझे लगता है क्वारंटीन में है. उसके अलावा शाहीन अफरीदी को भी फीवर है, जमान खान को भी फीवर है, सऊद शकील को भी फीवर है. If I can take this. Yeah. अच्छा, मैंने from what I've read के अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी and जमान खान ये चार क्वारंटीन में हैं. अच्छा, क्वारंटीन में ये चार क्वारंटीन में हैं. मगर फिर ये भी मैंने पढ़ा, जी न्यूज़ का आर्टिकल था कि PACB ने कहा है कि क्रेक इन्फो का ये जो न्यूज़ थी ये गलत है. अच्छा, जियो न्यूज़ ये भी फिर था, ये भी फिर उसके बाद है. I take everything with a kg of salt. I'm sorry फैजान भाई, love your work. नहीं फैजान भाई के साथ तो कोई नहीं. फैजान भाई के लिए बहुत इज्जत है मगर पता नहीं मैं, अगर फैजान भाई ने वो खबर दी है तो हम मान लेते हैं. हाँ, अगर फैजान भाई की खबर है तो मैं मान लूंगा, मगर जनरली जियो या किसी भी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को I always take all that news with a kg of salt. बात कर रहे हो तुम फीवर की तो देखो मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि यार ये क्वारंटीन वाला जो सिलसिला है कहीं कोविड ना हो और खुदा ना खास्ता कहीं डेंगी ना हो. डेंगी भी फैला हुआ है वहां पे. तो आई एम एक्चुअली रियली अफ्रेड फॉर द बॉयज. द ओनली सिल्वर लाइनिंग इज कि अभी भी कुछ दिन हैं ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में. सो होपफुली दे हैव द टाइम टू रिकवर. थोड़ी चलो ट्रेनिंग नहीं होगी मगर टाइम टू रिकवर मिल जाए और फुली फिट होकर वो वापस आए. बट इट्स रियली रियली वरिंग एंड आई होप दैट इट्स जस्ट अ वायरल थिंग. अगेन शाउट आउट टू गौरव नंदन त्रिपाठी, जिसमें त्रिपाठियों का खून है, जिसने बड़ा, by the way, I have to say, Gaurav really went out of his way to raise awareness about the Ahmedabad crowd. So massive respect to Gaurav and all those Indians who came to my DMs on Twitter, on Instagram, and specifically apologized to me for the crowd and appreciated our work. YouTube comments में भी थे काफी जिन्होंने किया. जहाँ इतनी hate है वहाँ पे positivity बहुत ज़्यादा थी and a lot of Indians do not endorse this sort of behavior and they've said specifically to me कि यार जी जरा अहमदाबाद का ऐसा scene है because it is the political hub of a certain party which runs the BJP CCI. Yeah, so उसमें क्या spearheaded by Willy Wonka, Jay Shah, you know, golden ticket बांट रहा होता है वो. But anyway, point is कि lots of appreciation to all of those Indians who came out and said that. And Gaurav mentioned कि there is a viral sort of thing going on in Bangalore or Bengaluru, and उसके बहुत दोस्तों को हुआ है. Every other person is sick, so hopefully it's just that. क्योंकि उससे फिर होपफुली आसानी से रिकवर कर जाएंगे. एक तो बल्कि नीहिल शर्मा थे, उन्होंने कहा था कि उनके अब्बू को भी इस तरह था एंड ही हैज रिकवर्ड. शुक्र है कि वो भी रिकवर कर गए. या तो yes, it's worrying and the fever situation is not ideal and all we can really hope for is कि come Friday
they're fully fit and raring to go, and fingers crossed for that, knock on wood. या बल्कि वो जो पांड्या ने बॉल पे फूंका था, Oh God. जिस पे पूरी पाकिस्तान की टीम बाद में आउट हो गई, 8 for 36 हो गया, जरा वो फुकवाओ इसके लिए भी, और जरा ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के लिए फुकवा लो, क्योंकि मुझे नहीं पता किस तरह आना है उनको। अच्छा खैर, फुली फिट की तुमने बात की, एक अच्छी न्यूज भी है, ऐसी नहीं है, इट्स नॉट ऑल नेगेटिव। या फखर जिसको नी इंजरी हुई थी, जिस बाय द वे, या ही इज रिकवर्ड, ओसामा को भी वायरल हुआ था, आई गेस ही इज फुली फिट एज वेल। Very good. सो ये दोनों, ओसामा खेलेगा यार आई थिंक ओसामा का टाइम आ गया खेलने का, क्योंकि ऑजीज को आपको थोड़ा स्पिन पे पकड़ना पड़ेगा, and I don't know where you fit him. You'll probably have to sit out Shadab, but I wouldn't mind if Pakistan go with 3 spinners. I don't know. I'm not sure. What do you think? I think Bangalore पे आके बात करेंगे, but I think Shadab, he is just not feeling it. Yeah. That's about right. feeling it. And He's we're not feeling saying it. कि शादाब खान isn't quality. मैंने तो उसको इसी Everyone शो loves पे Shadab. I love Like, Shadab. everyone I loves adore Shadab Khan. Yeah. He's one of my favorite players. T20 cricket में I think he is your hottest commodity Yes, out of yes. everyone. I think he is your MVP. But ODIs में उसकी length उससे नहीं पकड़ी जा रही. We Yeah. still see tons of drag back deliveries and and also full full tosses. Full toss कराना शुरू हो गया था। शर्मा को तो उसने मेरे ख्याल से शादाब ने कोई कोटा रखा हुआ है कि इतनी फुल टॉसें करानी है शर्मा को। तो I mean, I'm not saying कि he can't find his rhythm. He definitely has what it takes to turn things around. But right now, you know, when you have Osama Mir and if he is fit, तो might as well try him वाली बात आ जाती है। आगे अगर चिपॉक वाली गेम्स आ रही हैं आपकी अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड ही है ना, नहीं साउथ अफ्रीका, तो उन दोनों गेम्स में अगर आपके पास वो एक इस तरह का फ्रंट लाइन स्पिनर हो who is incisive and you know is a wicket taking option in the middle overs, particularly in the middle overs, then I think उसको पहले से जरा खिलाना उसमें थोड़ा बेनिफिट है। Yes. You lose out on a bit of batting, there's no doubt about that, and अब क्या- fielding. अब क्या करें? You lose out on tons in the field, but but क्या hopefully Shadab can be the 12th man and come in as a sub fielder, और उसको बड़े smartly, अगर हम जिस तरह श्रीलंका अपने सब फील्डर्स इस्तेमाल करता है, शादाब को अगर यूज करें तो that would be very very beneficial. By the way, Shadab, he when I say about not feeling it, I mean उसकी बैटिंग भी थोड़ी सी हो रही है इफेक्टिव। यार अगर आप उसकी बैटिंग देखो ना पिछले कुछ टाइम में, तो एक्चुअली देयर इज लॉट ऑफ गुड स्कोर्स इन देयर। अच्छा ठीक है, अभी वो he got a beauty by Bumrah, top of off. like Bumrah, like what do you say? Lots of people would have you know gotten cleaned up on that. 100%. Yeah. But like I mean, Netherlands के against he rescued us. Yeah, अभी तो किया है उसने बैटिंग में फ्रॉम नेदरलैंड्स वाले मैच में। Those are very valuable runs. my point is, I mean, I agree. जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वार्म अप मैचेस में like no one takes them seriously. ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी था, like वो लोग like डेविड वार्नर से ऑफ स्पिन करा रहे थे, स्टीव स्मिथ से भी ऑफ स्पिन करा रहे थे। एवरीवन थॉट वो लेग स्पिनर है, like I'm like what the hell. अभी यार अफगानिस्तान वाले मैच में लिविंगस्टन और रूट ने एक विकेट भी ली है, तो people are trying things, but yeah, you want 10 overs from Shadab, right? और मसला ये what I'm trying to say is like Osama Mir, one shot that he played अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग में, that inside out जो extra cover के ऊपर से, damn man, what the hell are you doing over here? नहीं, he is no mug with the bat. Absolutely. Don't take him lightly. It's not as good as a fielder as Shadab by any stretch, I mean, like, anyone fielding is not his strong suit, let's be honest. Yeah. But no mug with the bat, and maybe this is the time to introduce him into the 11, and if he can, you know, create some waves versus Australia, then that might be, you know, very, very fruitful, क्योंकि आगे turning tracks पे 2 matches हैं, चेन्नई की चिपॉक वाले surface पे. So if we can find some form versus Australia, he would be very well placed to take on Afghanistan and South Africa. Yeah, 100%. इंट्रोड्यूस की तुमने बात की ओसामा मीर, इंट्रोड्यूस हमने टेक्नो कैमन 20 प्रीमियर 5G को भी करवाना है, जिस तरह हम हमेशा करवाते हैं। तो ऐसे क्या बोलते हो? Cam on Techno. So go and buy this phone. Yeah. Techno Camon 20 Premier 5G. चेक किया इसके पीछे वो स्पाइडरमैन वाले वेब वाले भी डिजाइन बने हुए हैं, बड़ा कूल सा है, you know, Miles Morales and all that. मैंने लेनी भी है नई स्पाइडरमैन वाली गेम। अच्छा, मगर ये फोन भी लो ना यार तुम। टेक्नो पहले लो तुम लेना स्पाइडरमैन वाली गेम। You know, स्पॉन्सर को फायदा कराओ हमारे। सोचते हैं इसके बारे में। Yeah. अच्छा, coming back. Yes. Bengaluru pitch. Bengaluru pitch. Historically speaking, has been very, very good for Pakistan. Not counting the 96 quarter final. Not counting the 96 final. ना उसमें भी आप देखें,
Amir Sohail being Amir Sohail. Amir Sohail is the Gautam Gambhir of Pakistan. उनकी commentary aside. World Cup भी दोनों जीते मेरे साथ ही. हाँ, yeah. उनकी commentary aside ना, I mean like minus Amir Sohail ना, Bengaluru has been very good for Pakistan. अच्छा. 1987 में जो हम टेस्ट सीरीज जीते थे, वहीं जीते थे. We won the test. I mean, I was actually watching a documentary about that thing, about that test series, and Javed Miandad in his style was saying कि like हमने pitch देखी वहाँ पे और उन्होंने कहा ये हम रेगमाल है तो यहाँ पे आप उनको बुलाएं, हम तो तौसीफ अहमद को बुलाएं. I don't know if तौसीफ अहमद took 9 wickets in that test. Also, Tawsif Ahmed is the guy who was at the non-strikers end when Javed Miandad hit that 6. Yeah. Wow. And also Great Bangalore. fact. Great Bangalore fact. is the venue in which Inzi scored a ton in his 100th test, and you drew that series 1-1 in 2005. Yeah. No, 2007. 5. No, 100% 5. We won the test in 2005. हाँ, तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं. मेरे ताया की वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो, लाइक आपको दिखाता हूँ वो वीडियो जिसमें वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. अच्छा. Yes, you're right actually. वो सीरीज हमने ड्रॉ की थी, but we won the test. Yes. In Bangalore. Absolutely. Sorry. No, you don't have to be sorry about that. We make tons of mistakes on this show. We make tons of mistakes on this show. हम often अपने आप को correct कर देते हैं. पाकिस्तान के लिए overall Bangalore has been very fruitful. हाँ, मगर यार एक चीज मैं ये बोलूँगा कि बेंगलुरु की जो पिच है और ये IPL से हमें देखने को मिला है, चिन्नास्वामी is a road, it's a belter, और मुझे डर यही लग रहा है, and I hope I'm wrong, but पाकिस्तान का जो style of play है, does it suit the Bengaluru pitch, particularly versus a team like Australia who will go hard from the start, right? Yeah, can we bring in Fakhr for that? Yeah, we could. अभी हमें illness situation में नहीं पता. Maybe Fakhr will have to play, but I am in favor of Fakhr over Imam for that Bengaluru pitch. और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चला भी था, वो स्टार को छक्के दिए थे दुबई में, जो भी था दिए तो थे ना यार. I mean, if I can add, maybe the dropping of Fakhr, आपने ड्रॉप ही किया ना उसको, क्या पता उसका दिमाग भी सेट हो गया. हाँ, वो जो दूसरी स्कूल ऑफ थॉट थी कि यू गिव हिम सम रेस्ट, वो तो अब हो गया ना, तो अब माइट एज वेल ट्राई. बाकी देखो चिपॉक में जो चेन्नई है उसके अंदर तो वी बोथ वांट इमाम बिकॉज वी थिंक दैट ही इज अ बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन, बट फखर डज मेक सेंस टू मी फॉर दिस पिच. बट या लुक, ऑस्ट्रेलिया का मिचेल मार्श भी फॉर्म में आ गया, ठीक है, उसने भी फाइनली 50 कर लिया और वो मार रहा था, ठीक है. अभी तो आई हेयर ट्रेविस हेड इज आल्सो बैक. ट्रेविस हेड हैज ट्रैवल्ड टू बेंगलुरु नाउ, और आई थिंक ही विल बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन. खिलाते हैं या नहीं ये नहीं पता. अभी तो ही इज रिकवरिंग फ्रॉम अ फ्रैक्चर्ड रिस्ट. आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन एग्जैक्टली, बट मिच मार्श गॉट रन, सो आई थिंक दे माइट ट्रस्ट हिम एटलीस्ट फॉर अनदर गेम. बट वार्नर भी है, वार्नर ने तो कसम खाई होती है ना पाकिस्तान को तो मारना ही मारना यार. वार्नर को निकाल लेना यार प्लीज. 2019 में भी 100 मारा था ना. हाँ, या फिर T20 वर्ल्ड कप तो सबको याद है. आसिफ अली ने कैच ड्रॉप किया था. the famous meme. The famous meme. Sarim नाम है ना उस अंकल का. Shout out to you, Sarim. I hope you watch this show. Yeah, but look, on that surface, I would back Australia to outbat Pakistan, and Pakistan का यही है यार. We always win games, और we नहीं कहना चाहिए, बल्कि मैंने उस दिन ये बात की है ट्विटर पे कि we की नहीं कहना चाहिए इस नौकरी में, so apologies for that. पाकिस्तान नहीं, we do win games. चलो ProSports पे चलता है फिर. But in this profession you can't ever call your team we. You should always call it by the name of the team. But anyway, ये तो tangent हो गया ना. हाँ, बहुत हर जगह पाकिस्तान. हाँ, वहाँ यूं तो बाबर है वो वाला ad चल रहा है पीछे. But yeah, it's just really concerning कि can Pakistan outbat Australia, because that's how I think they will win this game, if they will this game. अब इसके अंदर जो प्रोज हैं वो ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर है. 2 मैचेस हारा हुआ 3 में से. यू कैन कैपिटलाइज ऑन दैट. आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन्स भी किए, इन ODIs गॉन बाय, इवन दो दैट वाजंट फुल स्ट्रेंथ, मगर कम से कम आपने किए हुए तो है ना. आपने 350 भी चेस किया. साइकोलॉजिकली जो है ना कि ऑस्ट्रेलिया है आगे, शायद वो वाला ना हो इस दफा. दूसरी चीज ये यार भाई, ठीक है वो हारे हैं, मगर ये स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, जैम्पा, ये हैं तो उन्हीं के प्लेयर्स ना. इन्हीं बॉयज ने खेलने ना, जैसी भी कंडीशंस हो, those guys will give you a very tough time. They're a top notch bowling attack. इंडिया को भी 2 for 3 तो कर दिया था. तो पाकिस्तान के बैटर्स they need to step up. और वही प्रो ये है
कि barring Mohammad Rizwan, who by the way is the leading run scorer in this World Cup with 248 runs, so salute to you as well, Mohammad Rizwan, keep shining, we wish you the very best. उसके अलावा कोई उस तरह नहीं चला, अब्दुल्ला का 100 है, ठीक है, बाबर 50 मारी मगर उस तरह चला नहीं है, और इमाम भी नहीं चला, और फखर भी नहीं चला, और बहुत ऐसे लोग हैं नीचे भी, इफ्ती नहीं चला, you know, जो अगर चल गए तो पाकिस्तान जीत भी सकता है, but they'll have to bat really really brilliantly in Bengaluru, and that is something that I'm really hoping that I'm proven wrong over here. मुझे नजर नहीं आ रहा मगर hopefully कर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का वही है यार, if they turn up they turn up, but they're going to have to turn up with the bat. I think they're going to have to. You have something to add to it? Yeah, I mean like Bangalore की बात हो रही है, दो Australian boys, they are local exactly Bangalore boys. That's very important to mention. Great point. Yeah, Maxwell and Hazelwood. Yeah. Maxwell को तो वैसे ही पाकिस्तान से खा रहे हैं. He averages 52 with the bat against Pakistan. रिवर्स स्वीप पे मारेगा ना जब वो हमारे स्पिनर्स को भी लेता है हमारे अगेंस्ट, विकेट भी लेगा, रिवर्स स्वीप पे भी मारेगा छक्के के लिए. And I think this is such a valid point because not just those guys who are RCB players, but this entire Australian team barring Mitchell Starc, वो भी वैसे बेंगलोर का ही प्लेयर था, रॉयल चैलेंजर्स का ही प्लेयर था back in the day. ये सब लोग यार IPL में क्रिकेट खेलते हैं, इनको कंडीशंस की बेहतर समझ है. पाकिस्तान even if it's a flat deck, they might take some time to adjust to the track because they haven't experienced this flat deck, right? उनको पता होगा कि फट्टा है मगर उन्होंने खेला नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया को तो पता है, so they're coming in with that prior knowledge and that's why they might have an edge, or they definitely will have an edge over there, जो कि पाकिस्तान के बैटर्स वैसे ही थोड़ा टाइम देखते हैं. अगर उन लोगों ने थोड़ा टाइम एडजस्ट करने में दे दिया तो that could prove to be fatal, you know, in this contest. अच्छा, तुमने स्टार्क की बात की, मैंने स्टार्क की थोड़ी बात Mitchell Starc. My God. Is he the best ODI bowler? You know, fast bowler. if you look at his World Cup record, he is 2 behind Wasim Akram. ठीक है, नहीं बल्कि 1 behind Wasim Akram and 2 behind Malinga. या 2 behind Akram and 3 behind Malinga. मुझे सही तरह याद नहीं है. He's pretty close. I think he's 1 behind Akram and 2 behind Malinga. Malinga कह दिया मैंने. Slinga Malinga. मगर उसकी अगर आप नंबर ऑफ इनिंग्स देखो ना तो वो उन सबसे बहुत ज्यादा कम है, कोई 20-21 से सिर्फ, ठीक है. एंड इन ODIs he what averages 22, ऐसा ही कुछ है ना. मिचेल स्टार्क even though he's past his prime remains a threat, और उसका जो वो लेफ्ट आर्म एंगल है शुरू में LBW तो मारने के फुल चांस है वहां. फुल मैं तो कहता हूं फखर फेस करे. हाँ, और स्टार्की जो है यू नो अपनी उसकी एक दहशत है. साथ साथ यार जैम्पा फॉर्म में आ गया. जैम्पा तुम्हें पता है महमूद, कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप इन द लास्ट 4-year cycle, 77 wickets at 22 apiece. Adam Zampa, no other seamer or spinner had taken as many wickets in that cycle, and now he's got 4 versus Sri Lanka, which will boost his confidence. अच्छा, इंडिया में उसका रिकॉर्ड prior to this match wasn't that great, right? Very terrible actually. और एकदम उसने कितना 60 odd की एवरेज थी, आई गेस 61 की एवरेज थी before he started taking all those wickets. मैंने ट्वीट किया और फ्लड गेट्स ओपन. मैंने बोला था ना बेराम का जिंक्स जो है ना, that's the deadliest. देखो ना, मैं किसी वजह से कह रहा हूँ पाकिस्तान हार जाएगा. I was actually shocked जब मैंने वो स्टैट देखा ना, last 6 matches and 7 wickets. और फिर उसने फिर लास्ट मैच में वो 4 विकेट लिए. God. Yeah, you know, उसके अलावा भी सॉरी यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाता है ना हमारे और उनके स्पिनर्स में. उनके स्पिनर में एक ही स्पिनर है. खैर अब मैक्सवेल I trust us to play him well. वार्म अप में भी अच्छा खेला था मैक्सवेल. सो हमारे स्पिनर्स बेचारे विकेट नहीं ले रहे. हालांकि नवाज ने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कराई, जस्ट बाय द वे. जैम्पा नहीं ले रहा था लेकिन फॉर्म में आ गया. इट्स हाई टाइम कि हमारा कोई स्पिनर अप करे. अच्छा, उसको निकाल कर भी स्पिन वाली तो कॉन्वर्सेशन तुम्हारी बिल्कुल जायज है, बट इवन इफ यू लुक एट पैट कमिंस, ही गॉट क्रूशियल विकेट्स. यू नो, हेजलवुड गॉट दोस विकेट्स वर्सेस इंडिया. They have been really good in patches, their entire bowling attack, and I think Australia की वो strength ही है इस मैच में, or the fact that they bat a certain way. So if you're talking about strengths and weaknesses, you know, there's not a lot of weaknesses unless we factor in the fact that Australia will be under pressure because they've lost a couple of games, और ज़्यादा margin for error नहीं है. मगर that could also bring out the best of the Aussies, जो कि पाकिस्तानी तो वो दिल तोड़ते ही रहते हैं throughout history. But in the World Cup, Pakistan has a decent-ish record versus them. Decent-ish. 6-4 in 10 matches. Not terrible. हम 87 में सेमी हारे थे मगर 79 में जीते. 92 में घर पे मारा, ठीक है. फिर 2011 में स्ट्रीक तोड़ी, जो कि हमने ही लास्ट हराया हुआ था 99 में 2 मैचेस में 1 जीते थे. फाइनल में तो उन लोगों ने जलील कर दिया था पाकिस्तान को, राइट. सादी स्टिल नॉट रिकवर्ड बाय द वे. तो जहां हम पूरी दुनिया को गेट वेल सून कह रहे होते हैं, शुभमन गिल और अब्दुल्ला शफीक, जरा गेट वेल सून सादी.
Thank you. If I can add, almost all of those matches starting from 87, सारे matches में ना हम we've kind of let the match slip from our own hands. 87 में last match में हमने वो 17 runs दिए. 99 के फाइनल में 99 के फाइनल की तो क्या ही बात वो लाइक ग्रीन टॉप में फिक्सिंग टेल राइट पाकिस्तानी फैंस बड़े कन्वीनियंटली खेल लेते हैं बाय द वे आज इंशाल्लाह अहमदाबाद नहीं किया यार इंशाल्लाह अहमदाबाद या इंशाल्लाह अहमदाबाद बेबी हां 99 के ग्रीन टॉप पे विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट या बिकॉज़ यू वांटेड रन्स ऑन द बोर्ड इवन द ग्रेट इमरान खान सजेस्टेड दैट यू नीड रन्स ऑन द बोर्ड बट एनीवे 2011 वाली विक्ट्री बहुत अच्छी थी 15-19 में आप हारे उनसे ठीक है 15 में भी मतलब you gave the match away right 15 का चलो we can say that उसको कह सकते हैं like 15 वाले में चलो अच्छी गेम थी अगर राहत अली ने कैच पकड़ लिया होता तो उसका भी like मगर स्टीव स्मिथ that match he was batting on a different surface उस वक्त वॉटसन को भी आउट कर लेते ना तब मैच बन सकता था बन जाना था स्टीव स्मिथ was batting on a different surface yeah but 4 down for not so many and the game changes yeah अच्छा उसके बाद what do we need to do to win? Achha, so sorry. Before we move on to that point, Australia again. I have a question. How much is Australia missing Nathan Lyon? I don't think they're missing him at all. He's not an ODI bowler. मुझे भी नहीं लगता. Even in Test cricket, he kind of gets into his zone और फिर आकर वो विकेट लेता है. He's not someone जो आते सार आपको इस तरह विकेट दे देता है. विकेट लेने के अलावा ना, I think he's the guy who like I'll tell you the caveat. The caveat is कि already they have a deepish tail. ठीक है? Long tail. I think Ashton Agar को miss कर रहे हैं इस pitch. Ashton Agar could have been a better shout than Nathan Lyon because he can bat. He can bat as well and he's an economical left arm. Batting utility दे रहे हैं मगर अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया की composition इस वक्त तो शायद और जगह नहीं थी. Zampa के ऊपर तो Lyon नहीं खेलता. So I wouldn't say they're missing him at all. But anyway, what did you say? How can we win this match here? Yeah, so I think कि Pakistan in order to win this match will have to outbat Australia. While I think that's not likely, it's not impossible. मैं फिर से यही बोलूंगा कि आपके सारे बैटर चले ही नहीं है ठीक है अब बाबर चल जाए तो वही बहुत बड़ा बोनस हो जाएगा बिग स्कोर बाय बाबर could really help Pakistan. They probably if they bat first they need 340 odd ठीक है कम से कम मिनिमम हाँ और अगर बैटिंग सेकंड कर रहे हो तो एक्चुअली मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बेहतर है क्योंकि फिर वो अपने तरीके से चल सकते हैं अपनी कैलकुलेशनें करके क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू गो हार्ड इन द पावर प्ले दे आर गोइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ मैथ ऑन एवरी 10 ओवर मार्क ठीक है वही करते हैं ये और चल भी जाता है कई बार नहीं भी चलता बट आई थिंक दे विल हैव टू यू नो आउट बैट देम बैटिंग से ही ये परफॉर्मेंस आनी है होपफुली रिजवान हैज अनदर स्कोर इन हिम एज वेल लॉ ऑफ एवरेजेस डज सजेस्ट दैट रिजवान विल फेल क्योंकि 248 रन्स उसने कर दिए हैं यू नो 3 मैचेस में मगर अगर आप पूरा साल देखो तो 73 की एवरेज से उसने रन किए पूरे साल में सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ही हैज व्हाट 750s 100 और अभी 8वीं 50 भी हो जानी थी इफ नॉट फॉर दैट जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह पीच ब्यूटीफुल स्लो डिलीवरी बाकी यार बस दुआ ही पढ़ो अगेन वही जो पांड्या ने फूंका था वो फुकवाओ जब बॉलिंग भी कर रहे हो और बस दुआ करो कि ये ऑस्ट्रेलिया का जो अटैक है वो अच्छा खेल जाए खास तौर पे नई बॉल अच्छी खेल जाए शुरू में विकेट्स नहीं गिरानी विकेट्स इन हैंड गेट टू अबाउट 220 to 230 at the 40 over mark after having lost like 3 wickets hopefully and then you can really go hard in the last 10 and get to that 340 odd score that's what I'm thinking but yeah I would say Australia are favorites in this game and I know a lot of people do not want to hear that but yahan pe hum you know ठीक है a lot of people also accuse me of false or toxic positivity Behram jinx हाँ toxic positivity की लोग बात करते हैं देखो यार मैं सिर्फ authentic रहता हूँ अपने काम पे I try to keep fandom out of it and that's exactly what I'm doing right now यार छोड़ो यार लोग तो तुम अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो कोई ना कोई तो कुछ लोग तो है ना वो सिर्फ बात ही करने आते हैं बुरी वो अच्छी बातें नहीं होती उन खैर वो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते it's not in your hands right my advice to anyone who goes through that block the block button really works like a charm block yeah अच्छा B for Behram B for block यार सेमीफाइनल्स की मैंने थोड़ी सी बात करनी है क्योंकि अब जो है ना अब टेबल खुल गया बहुत ज़्यादा खुल गया क्योंकि अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वाला जो मैच था और नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला उसके बाद टेबल खुल गया है और जो हमारी ओरिजिनल प्रेडिक्शंस थी शायद अब कुछ चेंज भी हो जाए उसके अंदर यार आई थिंक देखो 3 राउंड्स इन Pakistan still does find itself in the top 4 so woohoo you know कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान टॉप 4 में रहे
I'm looking at you, Shoaib Jatt. Who are those guys? Damn, Shoaib Jatt said कि he does not. नहीं, he said कि इंग्लैंड जब जीतेगा तो पाकिस्तान फोर्थ भी नहीं रहेगा, वो अपने स्टाइल में पॉइंट नहीं मार रहा वैसे होता। शोएब जट ने तो फुटबॉल टीम को भी बड़ी बातें की थी ना, फुटबॉल टीम को बातें की थी तुमने, मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा, before we even get into the semi-finals conversation, look, Saad has been very invested in Pakistan football. जाकर वो जीता है उस दिन, history create हुई है, ठीक है, uncharted territory. Pakistan had never qualified for the qualifiers of the World Cup. Now they're there. They're going to host Jordan, Saudi Arabia and Tajikistan. अच्छा, football fans, तुम भी सुन लो ये. हाँ. You know who Roberto Mancini is, right? Of course I do, man. वो सऊदी अरेबिया का हेड कोच है. I hate him. And he won the Euros. हाँ, United fan, by the way. He won the Euros Mancini. for Italy. He won अभी recently. the Premier League with Manchester City. Yes. He's gonna come to मिलान के Pakistan. लिए भी, Inter Milan. Inter Milan के लिए Inter. स्कुडेटो शायद जीता. या वो मिलान फैंस ने मुझे मार देना, तुमने उनको मिलान कैसे कह दिया? छोड़ देंगे, तारिक को छोड़ देंगे तेरे को. Sorry तारिक. अच्छा खैर, he's gonna come to Pakistan. He's going to come to Pakistan. Saudi Arabia defeated Argentina in the World Cup. उनकी सऊदी लीग में इतने बड़े-बड़े प्लेयर खेलते हैं. Where is Messi? I loved that video. मैं तो कहता हूँ कुछ सऊदी फैंस भी आए. उसके बाद वो मेसी की जॉइनिंग कर. यार कोई शेख शूख भी बुलाओ, जाके रोलेक्स ही पिला जाए हमारे प्लेयर को भाई. वो फाबिनियो को पिलाई थी ना. पिलाई तो नहीं थी. But I think it's massive. मैं उतना सपोर्ट नहीं करता. This was actually the first time I watched Pakistan. ये जो बड़ा मैच था कैम्बोडिया के साथ. आज हुआ हो गया यार. हाँ, पता नहीं, सारे ही फ्रॉइडियन बमरा कम्बोडिया सारे फ्रॉइडियन स्लिप्स आज ही निकल रहे हैं. बट इट वाज मैसिव. हिस्ट्री वाज क्रिएटेड. ऑल ऑफ यू गाइस शुड आल्सो वॉच सादीज football podcast. काफी वहाँ पे you're showing him a lot of love. Continue to show him more love. And ProSports is about all Pakistan sports. हाँ, for sure. अभी तो वर्ल्ड कप सीजन चल रहा है, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा क्रिकेट पे फोकस्ड है. वर्ल्ड कप के बाद इंशाल्लाह और बाकी फुटबॉल पे तो वैसे ही कर रहे हैं. ई स्पोर्ट्स पे भी करना है. ई स्पोर्ट्स पे करना है. एक बॉय ने लिखा हुआ था. आई फॉरगेट योर नेम. बासित है शायद. हाँ, बासित. We will do that e-sports show with you. E-sports पे भी करना है, हमने हॉकी पे भी करना है, स्क्वॉश पे भी करना है, टेनिस पे भी करना है. स्क्वॉश पे भी करना है. वो अभी बच्चा जो था वो जीता है ना आसिम. वर्ल्ड जूनियर वो जीता था. हाँ, हमजा खान जीता था. लेकिन हमजा खान वन. बट लाइक आज ही मैंने सुबह बल्कि ट्वीट देखी थी. आसिम खान वो ट्वीटेड के लाइक व्हाई डोंट आई हैव स्पॉन्सर्स ऑन द we're going to talk to them. It's a shame because you know we talk about legends of sport जिन लोगों ने completely own की है अपनी sport को. जहांगीर खान वाली जो domination है ना, I don't think anyone has done that in any sport. Ever. I think he's the winner over there, and it's sad that people don't know more about this. But point is, support Pakistan's football team, watch Saad's podcast, and celebrate this victory. It's huge. It's huge. मतलब never been done before. बहुत बड़ी चीज हुई है ये. And a casual Pakistan football fan like me who doesn't really know the names of people thoroughly enjoyed it. Keep going forward, onwards and upwards. क्या है? Harun Hamid. What a strike. Yeah. But anyway, coming to the semi-finalists. Back to the conversation. यार देखो, 3 rounds के बाद there are 2 teams which are unbeaten. India and New Zealand. India तो मेरे ख्याल से we should already pencil in as a semi-finalist. I think at best or at worst, whatever coin of the or side of the coin you're on, they would lose 1 game maximum. मुझे लगता है. कैसे? Group stage में मुझे इससे ज्यादा हारते भी नहीं नजर आते. कैसे हारेंगे? इंग्लैंड से हार सकते हैं if इंग्लैंड आउट बैट देम. हारने को तो वो साउथ अफ्रीका से भी हार सकते हैं. साउथ अफ्रीका से हार सकते हैं. जो न्यूजीलैंड इज देयर बोगी टीम. मोस्ट लाइकली आई वाज आस्किंग मोस्ट लाइकली. अगर नीदरलैंड्स जो है साउथ अफ्रीका की बोगी टीम है, तो न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया की बोगी टीम है. सो ये 3 टीमें हैं जो रखती हैं अपने अंदर सलाहियत उन्हें हराने की. हारेंगे या नहीं ये हम नहीं कह रहे. किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था कि आई होप देयर इज अनदर अपसेट विद इंडिया प्ले न्यूजीलैंड, एंड दैट वाज एन इंडियन हू सेड दैट. सो दैट वाज रियली गुड टंग इन चीक ह्यूमर. बट देखो, किसी ने ये भी बोला हुआ था कि पिछले 3 दिनों में हमने 3 अपसेट्स विटनेस किए. England losing to Afghanistan, Netherlands beating South Africa, and India beating Pakistan. ये मेरे ख्याल से मेरे कॉलीग ने बात की, ताहा ने. लेकिन उसने बोला था कि this wasn't an upset on paper, it just upset me. Actually, that wasn't Taha, but that's hilarious. But point is कि India को कर लेते हैं एक semi-finalist. Let's assume that they'll make it because I'm quite sure. No. New Zealand, just because they have 3 out of 3 and they're a fantastic tournament team, let's put them in there. ठीक है? 2 spots रह जाते हैं.
इसमें अब पाकिस्तान की हैं यार 6 गेमें, जिसमें से आपको 4 तो जीतनी है 6 विंस पे आने के लिए. यू शुड विन बांग्लादेश. अफगानिस्तान इज ट्रिकी बट एट बैक पाकिस्तान स्टिल. उसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में से 4 में से 2 टीमों को मारना है. और हम मार सकते हैं. मारेंगे या नहीं वो फर्क बात है, बट सलाहियत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं. तो पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन है. इंग्लैंड हैव इट टफ. इंग्लैंड जॉस बटलर्स अटैकिंग चैंपियंस, यू नो, वो लोग अपना हल्का मैच हार गए. Ben Stokes coming back, that gives them a lift. When is he coming back? I think I read an article like he's coming back for the next game. अच्छा चलो देखते हैं. But Stokes coming back. They do need him. वो क्लच फैक्टर ले आएगा ना. वो वाले मैचेस जिता देगा जो इंग्लैंड ने हारने होने. अच्छा तो अभी 3 games in अपनी प्रेडिक्शन से दो. या प्रेडिक्शंस में जरा कैलकुलेटेड जा रहा था ना. मुझे जरा मेरी बात तो खत्म करने दो. नहीं, एक सेकंड. ये हर 2-3 गेम्स बाद हम चेंज कर लेंगे. बट कन्वेंशनल विजडम एंड बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन, इंग्लैंड का जरा टफ है इस वक्त. हालांकि ये नहीं मैं कह रहा वो पहुंच नहीं सकते. दे कुड आल्सो गो ऑन अ रन. दे आर अ फैंटास्टिक व्हाइट बॉल यूनिट. दे कुड स्टार्ट गेटिंग थिंग्स राइट. बट इस वक्त मुझे मुश्किल लग रहा है. ऑस्ट्रेलिया आई थिंक आई राइट इन दैट कन्वर्सेशन. आई नो दे हैव लॉस्ट 2 आउट ऑफ 3, बट वो लोग अपने वो जो है ना बुरा तो नहीं कहना चाहिए, आसान वाला मैच जीते हैं, मुश्किल वाले मैच वो हारे हैं. तो अभी और भी उनके आसान मैच रिलेटिवली, इवन दो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ अपसेट्स, कुछ पता नहीं होता, मगर उनका बेहतर मुझे चांस लग रहा है इंग्लैंड से. और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में, यू नो, whoever holds their nerve better, I suppose, at the end of the day. What are your predictions? Pakistan, South Africa. Like Pakistan is like South Africa's juju team. World Cups में. Like going back to like 2009 T20 World Cup. वहीं से semi-final में शुरू किया. Like भाई अभी 2015 में भी Afridi with one of the clutchest World Cup performances ever. 2009 T20 World Cup में, 2015 World Cup में, 2019 World Cup में, 2022 T20 World Cup. यार मतलब कई दफा तो पाकिस्तान was the visibly weaker team between the two. 2015 में सबसे ज्यादा. Sorry I cut you off. सरफराज आया था as opener और उसने 49 मारे थे, very attractive 49. और उसमें शॉन पॉलक ने बोला था ना, shut यार. So that was a great memory, and yeah, I think I would actually back Pakistan versus South Africa, but England मुश्किल लग रही मुझे. So if we have to go with predictions, let's go with, or I'll go with India, New Zealand, Pakistan for the vibes. Conventional wisdom does not suggest Pakistan to me, at least right now, but I'm going to go for Pakistan because of the vibes. And yeah, toss up between South Africa and Australia. I'm going to change it. पहले मैंने South Africa बोला था, अब मैं Australia कर रहा हूँ. Yeah. What are your predictions? Yeah, India, New Zealand. I'm not going to say Australia. I'm going to say India, New Zealand, England, and Pakistan. ठीक है. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया नहीं. ठीक है. Actually मेरी भी यही है. अच्छा, तुम लोग दोनों इंग्लैंड को बड़ा बैक कर रहे हो यार. They'll come good. They will come good. Stokes आ जाएगा ना, वो ठीक. मेरा rationale. I would have said South Africa, but because they lost yesterday, ना, उनका मेंटल स्पेस खराब हो. तुम लोगों ने तोड़ दिया है महमूद का दिल. प्रोटियस बवूमा तौलिया जो लेकर बैठा था ना. South Africa was my second team, but like Netherlands ने जो उनके साथ किया ना फिर से वो C word ना. I don't want to say it. Yeah, let's not say it yet. We'll say it if we really have to say it at some point. But yeah, I mean, बोलना तो पड़ेगा. I trust South Africa. If they don't make it, then I'll say it. Yeah. चलो सही है. But मैं ये जरूर बोलूँगा कि इंग्लैंड तुम लोगों ने I know back की है. But the only thing that bothers me is कि वो अपनी आसान वाली गेम हारे हैं. और उसका उनको, you know, that can haunt them. पाकिस्तान भी जिम्बाब्वे से हारा था. फिर जॉनथन ट्रॉट की जो है ना बाछें खिल रही होंगी. खैर पाकिस्तान भी जिम्बाब्वे से हार के फाइनल में पहुंचा तो था, no doubt. कोई पता नहीं होता. Cricket is a funny game, right? Cricket is a very funny game. I think we've covered it all. Yeah, जरा इंशाल्लाह अहमदाबाद. Inshallah Ahmedabad. Yeah. So subscribe to our channel, like our video, and ring icon पे भी click कर दे. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.